What did it do for you? तन्हाइयाँ and धूप किनारे, उसने क्या किया for you as a person? मेरी प्राइवेट लाइफ मुझसे छीन ली. मीनिंग बहरोज मुझे मिले थे, कैगिशा और मैं, हम गए हुए थे पान खाने शाम को, और केफ्री इधर घूमे उधर घूमे. बहरोज मिला, कहता है बेटा एंजॉय कर लो, कल तुम्हारी जिंदगी चेंज होने वाली. मैंने कहा हाँ कह रहे हैं. ऐसी चेंज हुई है कि ये आपकी जिंदगी आपकी खत्म हो जाती है ना. इट्स नॉट योर लाइफ एनी मोर. आप खुल के आइसक्रीम नहीं खा सकते, पान नहीं चबा सकते, इनिशियली कुछ नहीं कर सकते. आप अपने नाइट सूट में बाहर नहीं निकल सकते हैं. इतवार बाजार, जुम्मा बाजार जाना, it was like I used to love going there. The first time I went after तन्हाइयाँ, it was a nightmare. भागी हूँ मैं वहाँ से. मैं I think 5-6 साल के लिए नहीं गई. फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती. You can't stay away, you just can't. So then I slowly started going out and but initially ज़रा डर लगता था. लेकिन एक और चीज़ थी, जब हम like I said वो एक family बन जाती थी. तो शुरू में जब even after it finished we all used to go out as a group. तो when you go out as a group तो ज़रा सा at bay रहता है. लेकिन आप अकेले जाएं with friends who are not part of the industry, it becomes a nightmare at that time. और अब तो उस वक्त तो खैर शुक्र है मोबाइल फोन्स नहीं थे, लेकिन अब तो बहुत ही मुश्किल काम है कि आप, अब तो खैर आपको बहुत केयरफुल होना होता है कि जब आप बाहर जाते हैं क्या कह रहे हैं, क्यों. लेकिन उस टाइम पे क्या था कि बिकॉज एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, तो व्हेन समवन वुड सी यू, इट वाज, आई रिमेंबर हम लोग शारजा के मैच में गए हुए थे, शनाज, माई सेल्फ, शकील एंड लैला जुबैरी. तो हम लोग निकले स्टेडियम से और हम गाड़ी में बैठे एंड विद इन सेकेंड्स वो गाड़ी फ्रॉम डे लाइट अंधेरा हो गया था, बिकॉज इतने लोग आ गए. एक तो एक्सपैट, आई मीन इट वाज स्कैरी. मैं तो ऐसे बैठी हुई थी और गाड़ी हिल रही थी, सो देन वहाँ शुरता आया करके उनको, बट इट वाज सो स्कैरी. तो वो उस किस्म की जो फ़ैन फॉलोइंग थी, बिकॉज कैसे ना कि अब थोड़ा सा लगता है कि लोगों को आदत भी हो गई है कराची में, दे सी अ लॉट ऑफ स्टार्स एंड but yeah, people like Mahira and Fawad and all these people, the Humayun, I'm sure they get it. हम तो खैर तो has-beens हो गए. Not at all, absolutely. I don't know. It's like अच्छा हाँ अच्छा. It's amazing कि आप जाएं YouTube पे तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या दिखती है? The moment you put it on, is धूप किनारे. तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, it's there, it's very much there, So and staring at you and reminding you that you are absolutely there. You're still alive. Yes. अच्छा, तो डायरेक्शन किस तरह आई? I mean ये डायरेक्शन आई थिंक शहजाद साहब को देख के, बिकॉज आई थिंक मुझे वो साइड बहुत इंटरेस्ट. अगेन खैर एक्टिंग इज ऑल्सो क्रिएटिव, बट समहाउ डायरेक्शन में आप फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ राइटिंग से आप शुरू इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, टिल द एंड एडिट तक. सो वो आप कॉन्स्टेंटली रिक्रिएट कर रहे हैं. और एक दफ़ा मैंने करना चाह रही थी, अपने पैसे जमा किए, एक प्ले किया, उसके बाद से मैंने कहा बस यही है काम. You enjoyed it. Love it, absolutely love it. मुझे बहुत पसंद है. तो क्या प्रोसेस उसका लिखना और उसके राइटर्स के साथ बैठना, वो सारा जो प्रोसेस है, you enjoy that? I enjoy that. Even and creating those characters. Characters, molding them. क्या कहते हैं, again then characters bring so much onto your actors, bring so much onto. फिर जो एडिट पे जब आप बैठते हो ना, वहाँ जो मज़ा आता है ना, and you're putting it all together. अच्छा, जब ये जो नाइटमेयर्स होती थी, so when you became an actor, did they resurface? नहीं. They never came back. No. Because उसका स्ट्रेस होता है ना कैरेक्टर प्ले करने का when you're acting. नहीं, somehow वो उस वक्त नहीं था, गायब हो गया सब कुछ. I think also जब आप काम कर रहे होते हो ना, तो आप by the time घर आते हो आप थके हुए होते हो. The body is it's more when you are in a real state, because that's not a stressful situation from the point of view कि आप like जैसे मैं जब कुचू के साथ इन्वॉल्व थी, तो माई पेरेंट्स डिडंट एग्री विद इट, सो दैट्स अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन. वो वक्त स्ट्रेसफुल था. वो था बिकॉज ऑब्वियसली माई पेरेंट्स, आई वाज वेरी क्लोज टू देम, और उनका ना होना और तो वो सारी चीज़ें. लेकिन किसने प्रपोज किया था? You proposed? मैंने. You proposed? Oh, what fun. I was studying. I was in England.
तो I had come back on one of the thing, तो हमने ये decide किया हुआ था कि while we are apart, तो ना वो किसी को देखेगा ना, I'm not going to meet anyone, meaning we'd committed to each other. मैंने कहा अगर commitment की हुई तो शादी भी कर लेते हैं. तो कहता अच्छा ठीक है कर लेते हैं. तो it was basically like and then that. you went to your parents and said कि मैंने अब सोच लिया है. मैंने सोच लिया है, अम्मा ने कहा मैंने ढूंढ लिया है. हाँ, तो वो एक जालिम माँ बन गई है. तो फिर कितना टाइम लगा उनको कन्विंस करने में? वो शादी के बाद. I think after I got married, my father, being a Pathan and all, everyone said, oh, you must have been your father. No, it was not. My father वो बहुत प्रैक्टिकल आदमी था. तो उसने जब एक दफ़ा देख लिया कि इसने तो डिसाइड कर लिया है, अम्मा ने बात करना छोड़ दिया था मुझसे फॉर अबाउट 2 weeks. और तो शादी के लिए आई हैड टू मूव आउट द हाउस. आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस, बानोस हाउस, वहाँ से मेरी शादी हुई थी. तो लेकिन अब्बा जो थे उन्होंने वो प्रैक्टिकल मोड में आ गए. कहाँ रहोगी, गाड़ी तुम ले जाओ, कि फिर इट वाज अबाउट लिविंग हर लाइफ. और आई थिंक अगर अम्मा इतना ज़्यादा, बिकॉज अम्मा ने भी यही किया था, शी वाज, माई मदर वाज इंग्लिश, सो व्हेन शी मैरिड माई फादर, माई ग्रैंडफादर डिडंट स्पीक टू हर फॉर 6 months. सो आई थिंक वो उनके माइंड में वो एक कहानी रिप्ले हो रही थी. बट डैडी डिडंट रिएक्ट एज इनिशियली. तो इट वाज लाइक क्या मतलब है, ख़त्म करो. अच्छा ख़त्म हो गई बात. मैंने कहा डैडी नहीं ख़त्म नहीं हुई. एवरी डे इट कम डाउन. ओके इज इट ओवर नाउ? आई सेड नो डैड, इट्स नॉट ओवर. तो अगर अम्मी इतना ना अगेंस्ट होती तो डैडी शायद निकाह पे आ जाते. ही वुड हैव कम टू द शादी, बट ही डिडंट. सो देन आफ्टर वी गॉट मैरिड, कुचू गॉट वेरी इल. नो, Shehzad Saab died a week after, and I spoke to Mummy for the first time after her silent period, because she was also very close to Shehzad Saab. So that और मेरे लिए तो it was like, मैं कहती हूँ कि even when he was alive, he did so much for me, because my life was totally molded because of him. I mean, I think Shehzad Saab अगर मेरी ज़िंदगी में ना आते तो I don't know what I would have been doing right now. मैंने कहा in his death also he did something good for me, and he reunited me and my mum. And we spoke for the first time, went to the house. But by that time, Kuchu थोड़े से, sorry, I call my husband Kuchu. We all call, everyone calls him Kuchu. नहीं, इसीलिए मुझे मुश्किल हो रहा था to Jaleel. क्योंकि I wanted to tell everybody कि Jaleel and then Kuchu, because you, because he's so adorable and lovable. So Kuchu. Absolutely. Kuchu. तो तब Kuchu को ज़रा सा फील हुआ कि नहीं, आई एम नॉट रेडी टू मीट दम नाउ. सो उसकी वजह से भी जो हमारी आई थिंक बहुत पहले से हो जाता, इट वुड हैव बीन ओके आफ्टर दैट. सो आफ्टर आई थिंक शहजाद साहब पास्ड अवे, आई थिंक he then Kuchu got very sick. He was in hospital for a while, and then I think it took a couple of months. But mummy और daddy से मेरी फिर बातचीत शुरू हुई. मेरी daddy से तो थी, but I would go and see daddy, and mommy would she would come and sit in the room, but she wouldn't talk to me. But she wanted to know what was happening. I know that. It's amazing, है ना? It's very strange. And then he must have become her favorite. Absolutely. This is what happens, you know. और मुझे पता था. मुझे पता, because मैं कुचू का nature था. Because she didn't even allow herself to. But in the when she got sick, she wrote a letter to Kuchu saying what she wants done on her funeral, where she wants to be buried. She wrote to Kuchu. She didn't write to any of us. She sent him an email, and then we followed the instructions of what she wanted to do. So that was the thing. What happened to her? Mom, she got cancer. Oh, I'm so sorry. Dreadful disease. I know, and it's amazing कि अब इतना कुछ हो रहा है, but they're not finding the cure. जबकि it's in a cell. It's there, and apparently we all have the cell. And we all have the cell. That's why you have to stay away from sugar. Sugar. Yeah. So she initially got lung cancer, which we thought was because of the smoking, लेकिन it had nothing to do with smoking. तो वो बहुत अच्छा contain हो गया था. Dr. Nehal, God bless him, एक गोली निकली है टार्सिवा के नाम से निकली थी, which was, I think in Japan they experimented on Asian women with that particular type of cancer. And it was like a chemotherapy, but like she didn't lose her hair or anything. It was just a pill she took. But then
the smoking got her, which was stomach. She got that. फिर वो जो उसके बाद से then it was that was the killer, I would say. It was.